सो दोस्तों, आज का वीडियो को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक पार्ट है कि आई टॉक अबाउट माय एक्सपीरियंस एंड फ्यू ऑफ द ड्राइविंग टिप्स व्हेन यू आर ड्राइविंग इन अ फॉगी रोड। और दूसरा पार्ट रहेगा हम जब विज़िट करेंगे दंडाधर डैम। सो स्टे ट्यून्ड। गुड मॉर्निंग दोस्तों। नया दिन है, ठंडा मौसम है काफ़ी। मैं आपको कैमरा टर्न ऑन करता हूँ दूसरी तरफ। अब है जैसे स्मॉल गांव में आप देखते हैं कभी कभी विजुअल्स इसी टाइप का है। अभी आज हम जा रहे हैं दंडाधर डैम। यहाँ से करीबन 60 किलोमीटर्स है। मैं आपको दिखाता हूँ और 1.5 घंटा लगेगा। फॉगी रोड रहेगा तो हम देखते हैं कैसा है। मैं धीरे धीरे जाऊँगा, आपको आज इसका कवरेज देते हैं। ओके सो दोस्तों, आज वी आर ड्राइविंग थ्रू द फॉगी रोड। तो आज मैं आपके साथ कुछ शेयर करूँगा माय एक्सपीरियंसेस और टिप्स दैट आई हैव। सो पहला रहेगा, ब्रेक्स और टायर्स आपके परफेक्ट कंडीशन में होने चाहिए। फॉगी कंडीशन में हो सकता है आपको इमीडिएटली ब्रेक अप्लाई करना पड़ जाए, तो ऐसे केस में अगर आपके ब्रेक्स अच्छे हैं, टायर्स अच्छे हैं, सो द डिस्टेंस ब्रेकिंग डिस्टेंस विल बी रिड्यूस, तो इमीडिएटली ब्रेक अच्छे से अप्लाई हो जाएगा। 55 टच करेंगे, इस रोड है, यहाँ से हम राइट लेंगे टर्न एज वी आर ड्राइविंग थ्रू। पॉइंट जो रहेगा आपका कि ऑलवेज कीप योर कॉन्सेंट्रेशन ऑन द रोड, फोकस हमेशा बनाए रखें। 1 सेकंड का ही आपका डिस्ट्रैक्शन होता है एंड द एक्सीडेंट हैपेंस। तो अगर आप लंबा ड्राइव कर रहे हैं तो बेटर च्यू गम और कोई माउथ फ्रेशनर है, कुछ ना कुछ च्यूइंग करे सो दैट यू आर अवेक एंड फोकस्ड। ऑलवेज कीप अ आई ऑन द रोड। तीसरा जो पॉइंट रहेगा आपका, अपना सीट पोजीशन है उसको एडजस्ट कर लीजिए और मेक श्योर दैट यू आर सिटिंग अपराइट। जितना अपराइट बैठेंगे आपको बोनेट का विजिबिलिटी बहुत अच्छा रहेगा। और लीन होके मत बैठिए, जितना स्ट्रेट आपका बैक साइड का रखेंगे उतना अच्छा है। एंड मेक श्योर यू आर सिटिंग इन अ कंफर्टेबल पोजीशन सो दैट यू कैन अप्लाई ब्रेक्स एंड क्लचेस व्हेन नीडेड। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। The fourth point is keep your windshields and windows very clean and क्योंकि आप windshield और windows अगर clean रखते हैं तो you can look at your surroundings while driving, which is very important in a foggy day. And make sure that you are using the defogger as well. The fifth point, which is a very important point, is using of your indicators and the fog light, parking light that is. So आप make sure करिए when you are driving you keep that lights on. Not only for you, it benefits for the other vehicles who are coming in front and coming from your back side. So if you are taking a turn somewhere, make sure that before 10 seconds or 20 seconds advance you switch on the indicator for the respective direction, so that the vehicles that are coming from back side they can see it. The sixth point is keep your headlights on a low beam. जब ज़्यादा विजिबिलिटी कम हो, 100 मीटर्स से लेस हो, बेटर सजेशन है कि यू कीप योर हेडलाइट्स ऑन अ लो बीम एंड हैव योर कार्स इक्विप्ड विद अ फॉग लैम्प्स एंड यू टर्न दैट ऑन। मेक श्योर दैट नॉर्मली लोग क्या करते हैं, हाई बीम में चलाते हैं, बट इन अ फॉगी कंडीशन इट रिफ्लेक्ट्स बैक, सो इट्स अ विजिबिलिटी प्रॉब्लम फॉर यू एज वेल एज द अदर्स। सो मेक श्योर दैट यू आर फॉलोइंग दिस। द सेवेंथ पॉइंट इज नेवर ओवर स्पीड। नॉर्मली क्या होता है, एड्रेनलिन रश होता है और व्हीकल्स कम होते हैं कंपैरेटिवली, सो यू फील लाइक ड्राइविंग फास्ट, बट स्पीडिंग इन एनी केस इज़ नॉट एडवाइजेबल एंड पुअर विजिबिलिटी में इट इज़ अ बिग नो। एंड नॉर्मली क्या होता है, व्हेन यू आर ड्राइविंग ऑल ऑफ अ सडन अ व्हीकल कम्स एंड यू वोंट बी एबल टू जज द डिस्टेंस एंड एवरीथिंग, सो इमीडिएटली आप ब्रेक नहीं लगा पाएंगे एंड इट विल लीड टू एक्सीडेंट। सो it will be a challenge to react quickly and gauge the surroundings and the vehicles front and behind. So basically that's why I would recommend drive at a slow pace and make sure that you are judging the traffic front and back. The 8th point is अपने लेन पर ही है, you stick to your lane. ये बेसिक ड्राइविंग लेसन है, बट विजिबिलिटी जब कम होती है and you have a foggy condition, you need to keep your vehicle within its lane always. एंड आप अपने इसमें रहने से ये रिस्क ऑफ गोइंग ऑफ द रोड, अदर व्हीकल में क्रैश करना, ये इट रिड्यूसेस। एंड लेन मेकर्स जो होते हैं ऑलवेज फॉलो दैट, अपने लेन में ही रहिए and on a single road make sure that you're driving on the left side always to avoid the collision.
9 पॉइंट नहीं कहूँगा, अगर आपको ज़ीरो विजिबिलिटी है और बहुत ज़्यादा फॉगी है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, इन दैट केस व्हाट यू डू इज़ यू पार्क योर कार, थोड़ा ऑफ रोड ले जाएं एंड उसको पार्क कर दें एंड यू कीप योर हज़ार्ड लाइट्स ऑन एंड वेट फॉर द विजिबिलिटी टू इम्प्रूव। ज़ीरो विजिबिलिटी में जनरली बहुत रिस्की होता है ड्राइव करना, सो यू कैन डू दैट। और नेवर पार्क द व्हीकल ऑन द साइड लाइन ऑफ रोड, रोड के हल्के से साइड में मत रखिए, स्पेशली फॉगी कंडीशन में, क्योंकि पता नहीं चलता है। बेटर टू ऑफ रोड चले जाइए, रोड के नीचे कहीं जगह देख के, अच्छा जगह, एंड पार्क इट देयर। फॉरेस्ट रेंज है और काफ़ी सुंदर जगह है। 10th पॉइंट वुड बी नेवर ओवरटेक। जनरली क्या होता है, गाड़ी स्लो चलती है तो यू फील लाइक यू कैन ओवरटेक, बट when you are taking over a vehicle, it might distract the other vehicle, and the vehicle coming in front also you will not be able to gauge and it will lead to a collision. So always have a safety distance between your car and the other car to make sure that if required you can brake on time and you have enough time to maneuver your vehicle just in case there is a danger. So it might take a little while for you to reach your destination, but always safety should be priority for you. और एक पॉइंट रहेगा कि आपका जो कभी कभी अर्ज होता है कि यू यूज़ द लाइट्स ऑफ अदर व्हीकल इन फ्रंट ऑफ यू एज अ गाइड इन फॉगी कंडीशन. दिस कैन एक्चुअली कॉज यू टू फोकस टू मच ऑन द नैरो पैच, कैन नॉट इन फ्रंट ऑफ other things that are coming from side, from behind, so that also need to be cautious. Skip the cruise control if your vehicle has cruise control. Foggy roads में maintain a complete control of your vehicle and do not use the cruise control. और एक point है, do not accelerate if your car, if others car is behind you and they are honking. Do not try to accelerate during a foggy condition or normal case में भी. Let them go. You can drive at your controlled speed. सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, स्टे होम इफ़ देर इज़ फॉग कंडीशन इज़ वेरी बैड इफ़ पॉसिबल. अगर इम्पॉर्टेंट नहीं है, अवॉइड कर सकते हैं, देन यू स्टे एट होम ड्यूरिंग अ फॉगी कंडीशन, बिकॉज फॉग कैन मेक ड्राइविंग वेरी स्केरी एंड डेंजरस समटाइम्स. आप दिल्ली वगैरह में देखते हैं कितने एक्सीडेंट्स होते हैं. और एक पॉइंट है, कहीं पर आप गाड़ी रोकते हैं तो चेक योर मिरर्स बिफोर स्लोइंग डाउन एंड जेंटली अप्लाई ब्रेक्स. The earlier you can start and apply the brakes, the better it is. Brake light से दूसरे ड्राइवर को भी अलर्ट चला जाता है and they are not surprised by your vehicle stopping all of a sudden. दोस्तों अभी हम NH53 में हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक रास्ते में मेरे को एक तालाब दिख गया, तो आई थॉट ऑफ टेकिंग इट. काफ़ी बड़ा है, तो लेट मी टर्न माई. ये कामाख्या में पड़ता है NH53 में, देख सकते हैं काफ़ी बड़ा है. इट्स अ ह्यूज वन. कितना सुंदर है देखिए आप. तो दिस इज़ दी विलेज वाइब फॉर यू. आगे से एक ये जो छोटा सा विलेज दिख रहा है, यहीं पर से आप आगे से आप देखिए, यहाँ से हम लेफ्ट लेंगे तो राइट नाउ हम कामाख्या नगर जो है वो एरिया में है, टाउन कह लें, विलेज कह लें, उसी में है. तो हम सोच रहे हैं कहीं ब्रेकफास्ट कर लें, तो देखते हैं होगा तो हम ब्रेकफास्ट कर लें. सो दोस्तों अच्छा ब्रेकफास्ट हमने कर लिया, गुलगुला, समोसा, आलू चॉप और सब्जी के साथ. नाउ विल अगेन स्टार्ट आवर जर्नी. और कुछ टिप्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, हाउ टू ड्राइव एंड व्हाट आर द थिंग्स यू नीड टू फॉलो व्हाइल ड्राइविंग ऑन अ हाईवे और रोड. इसमें एक पॉइंट रहेगा कि अप्रोप्रिएट सिग्नलिंग, एज यू कैन सी द ब्यूटीफुल रोड हियर. एक चीज़ है कि अप्रोप्रिएट सिग्नलिंग व्हाइल यू आर aware of other movements of other vehicles. It is equally important that you are notifying other vehicles as well that you are taking a move or you are moving somewhere. Give a proper signaling, left हो गया, right हो गया, parking light जो भी है. और एक very important point है हाईवेज पे आप जब ड्राइव करते हैं, pit stops, stopping at a regular interval is very important on long highway drives basically, because driver can easily get fatigue
and tired, and it can be very dangerous, especially high speed में जब आप चलाते हैं. Always make sure that you are hydrated, and occasionally you take a break and change the temperature also. कभी ठंडा ज़्यादा होने से भी आपको नींद आता है, you feel drowsy, and so in that cases you stop the vehicle and make sure that if you have a extra other person who knows driving, swap drivers if you are not alone, and always make sure that you are alert and you're talking, you're always active. और एक बहुत important point है rainy days and wet roads or wetty conditions. When you're driving in wet or rainy season, restrict your speed, especially wet patches जहाँ पे रहते हैं, puddles वगैरह रहते हैं. You have to be very careful while driving. It might damage your vehicle, also lead to accident. Water जब ज़्यादा होता है, the pool of water that at a high speed, it should be avoided, क्योंकि वो टायर पे आपका लग जाता है. The car to get out of control, and braking also becomes very hard जब आपका water pool में जब टायर आपका लग जाता है. So इससे क्या होता है कि your vehicle skids off the road, and it can crash into another vehicle due to lack of grip. So during heavy rains, keep your headlights on and drive slow, or और वेरी इंपॉर्टेंट, इफ़ यू आर ड्राइविंग ऑन हाईवे और घाट रोड कहीं भी हैं, लॉन्ग जर्नी पे जा रहे हैं, मेक श्योर दैट योर व्हीकल इज सर्विस्ड, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, यू डू नॉट डू इट एंड योर व्हीकल स्टॉप्स और कुछ प्रॉब्लम आ जाए. तो बेटर है यू गेट इट चेक, गेट इट सर्विस्ड. घाट रोड पे चला रहे तो नेवर रश, नेवर ड्राइव फास्ट. गिव वे टू दिस गोल्डन रूल ऑफ गिविंग वे टू अपहिल ट्रैफिक. जो गाड़ी ऊपर चढ़ रही हैं, यू शुड गिव देम वे टू गो. And never put your car on neutral mode. Always make sure that your car is in gear so that it is in control. We are nearing by Kamakhyanagar 19. As we were driving through, I spotted some cute puppies. They were sleeping on the road. It was quite a beautiful moment. I had stopped my car, and because वहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक तो है नहीं, so I spent some time with these puppies. I tried to capture these moments. Let me share those moments with you. After spending some time with these cute puppies, now I'm heading towards the Dandadhar Dam again. मैंने हाफ एन आवर तक वहाँ पर बिताया. काफ़ी ब्यूटीफुल मोमेंट था उनके साथ. एंड another 10-15 minutes and I'll reach the dam. As we are driving through this beautiful road, मैं अभी आगे जाके हम जब पहुँचेंगे, मैं बताऊँगा आपको दंडाधर का डिस्टेंस कितना है सब जगह से, और कैसे आप रोड कंडीशंस आपको बताऊंगा, और हाउ दंडाधर डैम हैज़ टर्न्ड जैकपॉट फॉर दिस ट्राइबल विलेजर पीपल. और इन फ्यूचर दंडाधर रिजर्वर में भी डेवलप्ड एज अ बर्ड सेंचुरी. उसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या हैं, और ओवरऑल डिटेल्स में बताऊंगा डैम के बारे में, कितना बड़ा है, कैसे कैसे आप वहाँ पे घूम सकते हैं, और क्या क्या चीज़ें हैं. सो ऑल दीज डिटेल्स आई विल बी प्रोवाइडिंग, सो स्टे ट्यून्ड एज वी आर पासिंग थ्रू. सो आज वी हैव रीच्ड, मैं डिस्टेंस में बता दूं आपको, ढेंकानाल से इट विल बी 64 किलोमीटर, अनुगुल से 78 किलोमीटर, कटक से आपको पड़ेगा 110 किलोमीटर, और भुवनेश्वर से 125 किलोमीटर्स. गूगल मैप डिटेल लोकेशन वगैरह आई विल शेयर इट विथ यू गाइस. This reservoir is huge in terms of area.
spread over 500 square kilometers and really beautiful. अभी हम पहुंच गए हैं दंडाधार डैम। मैं अभी कैमरा टर्न करूंगा तो ये आपको दिख रहा होगा डैम। इस तरफ जो है आपका माउंटेन रेंज रहेगा। मैं आपको दिखाता हूँ, इधर से हम जाके भी देख सकते हैं वॉक करके। काफ़ी अच्छा जगह है, अच्छे से मेंटेन भी किया है। पास में एक पार्क भी है और ये डैम आप देख सकते हैं, 2 गेट हैं। काफ़ी बड़ा वाटर रिजर्वायर है और पीछे आप देख सकते हैं माउंटेन्स एंड जंगल है पूरा। और इसके बारे में जो डिटेल्स है मैं सारा कुछ आपको बताऊंगा, कैसे पहुंचना है, क्या रूट रहेगा, कैसा है रूट, पूरा आपको मैं डिटेल्स में बताऊंगा। सो अभी यहाँ पे हम थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे और उसके बाद देन आई विल मूव ऑन टुवर्ड्स माय होम। This dam is a dedicated project, for irrigation, situated on Ramyal River, and this entire reservoir is surrounded by small mountains and forests, which makes it look really beautiful. और ये वैली में जो पानी हमेशा भरा रहता है, that makes it look really beautiful throughout the year, and best place for picnic during winter especially. This place actually is visited by tourists all throughout the year because यहाँ पे weather काफ़ी अच्छा रहता है, cool atmosphere, and the landscape and the clear water here makes it ideal combination for anybody to make a trip to this place. Dandadhar Dam is overflowing with aquatic fauna and has many small islands as well. यहाँ पर काफ़ी सारे माइग्रेटरी बर्ड्स in thousands, hundreds of numbers come during the winter time. They come from as far as Siberia, Russia as well. I'll be giving you a walking tour of the bridge and everything, show you the water reservoir as well. Let me talk about how this is has lot of natural beauty, which brings a lot of tourist attraction towards this place nowadays. वेदर वाइज इट हैज़ अ वेरी मॉडरेट क्लाइमेट। अप्रैल मई को छोड़ दें तो थ्रू आउट द ईयर इट हैज़ अ वेरी नाइस कंफर्टिंग वेदर, एंड ज़्यादा ठंडा नहीं रहता है। ड्यूरिंग विंटर इट कुड गेट अ लिटिल बिट कोल्डर, बट दैट्स ऑल राइट। इट हैज़ गुड मानसून एज वेल। सो आप वन डे के लिए विजिट कर सकते हैं। देर इज़ नॉट मच ऑफ अ स्टे ऑप्शन, यू कैन स्टे इन ढेंकानाल, बट यहाँ पे बिकॉज इट इज़ अ वेरी ट्राइबल एरिया and you won't have good hotels here. As some of the locals are going now, let me ask them if there are any villages on the other side of the dam. ए भाई ना सेपटे कौन गाँव अच्छी ना कौन को गाँ? I just spoke with them. They said on the left side of the the dam there are some villages, and it connects to the road which goes towards Talcher. And on the the front that you see here, there are also quite some villages on the other side of the reservoir as well. तो काफ़ी बड़ा रिजर्वायर है, काफ़ी विलेजेस इस पे डिपेंड भी करते हैं फॉर द इरिगेशन एंड फार्मिंग। आप जो लेफ्ट साइड देख रहे हैं, लेफ्ट साइड से रिवर जाता है टुवर्ड्स दी अहेड टुवर्ड्स ढेंकानाल, रामियाल रिवर जो है। काफ़ी अच्छा जगह है। 2 गेट्स इसके जो देखिए काफ़ी बड़े बड़े गेट्स हैं, और यहाँ पे टूरिस्ट अट्रैक्शन में एक दंडाधर वाटरफॉल भी है, और देयर इज़ अ शिवा टेम्पल ऑल्सो दैट यू कैन विजिट जो नियर बाय है। इतना तो है कि ये इसके आसपास में आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे पिकनिक स्पॉट हैं। यहाँ पे लोग अक्सर वीकेंड्स में हो गया, ओकेजन्स में पिकनिक करने के लिए आते हैं। पूरा ये देखिए एरिया जो है माउंटेन से घिरा हुआ है। Now let me talk about how Dandadhar has turned into a jackpot for these villages around here. तो बहुत सालों पहले यहाँ पे बहुत सारे villages जो हैं आसपास में, they used to suffer a huge loss, because during the rainy season water used to gush and take away all the crops in the monsoon season, और dry season जैसे summer season में they used to not get enough water because water रहता नहीं था। So
In the 70s, when Nandini Satpathy was the Chief Minister of Odisha, she decided to bolster the agriculture sector of the backward areas and backward people. And with the efforts of her, there were two dams that were they were planned, and the construction started in the 1975. उस टाइम पे ये जो रमियाल रिवर है, इट इज फ्लोइंग थ्रू बोथ द साइड्स रिजर्व फॉरेस्ट. एक साइड में रांझागढ़ एंड अदर साइड में केरजोला रिजर्व फॉरेस्ट है. तो कंस्ट्रक्शन होके 424 मीटर हाई डैम was built across the river, so that it can hold the gush of water that comes from Ramial river. Because this river goes through both Dhenkanal and Keonjhar, so both district had some of the villages which were affected by this, and they were displaced because of the dam. So the families were rehabilitated for different colonies, and few were rehabilitated to some other colonies somewhere else. And in 1983 the dam was full-fledged. The dam is sprawling over almost 320 square kilometer, and has a retaining water capacity of 600 cubic per meter power. And there are 4 gates to release the water from the dam, and it has 2 main canals also. So basically farmlands get in far area get the irrigational water coverage through these sub canals. So in Kharif season, around 6,128 hectares of farmlands are irrigated, while 3,200 hectares are irrigated in the Rabi season. Both the canal supplies water to different blocks and different villages. So that lot of villages use the water for their farmings. पर डैम के बिल्ड होने के बाद इट हैज़ बिकम अ लाइफ लाइन फॉर द ट्राइबल फार्मर्स ऑफ दिस ग्राम पंचायत अराउंड दिस एरिया. और उनके इकोनॉमी भी अच्छी हो गई है, बैकबोन अच्छा हो गया है, बिकॉज ऑफ द रिवर नाउ हैज़ इनफ वाटर, एंड ऑल द फार्म लैंड्स विच आर डोमिनेटेड बाय हिली एरिया, they are able to use it for agriculture and farming. Apart from that, tourist attraction is another thing. यहाँ पे अभी डैम होने के बाद lot of tourists from different places try to visit, and government also इसको आगे जाके एक bird sanctuary की तरह भी घोषित करने वाली है. So there are discussions. Let's hope that that happens. So all in all, this is not that much highlighted or explored places like you have your Puri or you have Konark or other places which are quite famous. But this is a very nice place to visit if you want to just have a picnic or have a day outing. And as I am leaving the place now, I can say that you can plan for a day outing if you are staying nearby or have traveled to Odisha, Bhubaneswar. I'll give you all the details, including the location, as well as where all you can stay. You can definitely plan. Not the dam itself. You will enjoy the journey that you will travel through, especially if you're traveling from Dhenkanal. The route is quite scenic and roads are quite good, so you will enjoy the ride as well. Or as I'm going now, in the drawbacks or some of the things which could be improved here, मैं बता दूं, they could have certain at least guest houses or some nivases, at least stays where people can come and stay just in case people were traveling from outside of Odisha. So it still needs to be developed. Some of the shops also बहुत कम हैं, तो ये एक चीज़ में गवर्नमेंट इस पे काम कर सकती है. बट दैट इज़ अंडरस्टैंडेबल कि आगे जाके जैसे जैसे फुटफॉल यहाँ पे बढ़ेगा, लोग आते जाएंगे, लोग ट्रैवल करेंगे, विजिट करेंगे, मे बी दे विल ऑल्सो, बट गवर्नमेंट डेफिनेटली नीड्स टू लुक इनटू इट.
एंड मे बी देन जैसे अभी बात चल रहा है कि यहाँ पे बर्ड सेंचुरी बन सकती है, अगर इसको ये कन्वर्ट करते हैं इस पे, तो इट माइट ब्रिंग मोर टूरिस्ट अट्रैक्शंस हियर. हैविंग सेड दैट, राइट नाउ इट इज़ अ वेरी गुड पिकनिक स्पॉट इफ़ यू वांट टू कम एंड स्पेंड वन डे. कैंपिंग भी यहाँ पे लोग आजकल बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, दैट आई हैव हर्ड फ्रॉम द लोकल्स. सो दैट ऑल यू कैन डू. एंड रोड अच्छा है. You can definitely drive through by your car and visit this place. It will be hassle free of 60 kilometers from Dhenkanal towards this. So I'll see now, as I have stopped here. The location बहुत अच्छा था यहाँ पे, and I'll have lunch and then I'll go towards home. So यहाँ पे एक लोकल होटल था जस्ट बिफोर ढेंकानाल, कामाख्या नगर एरिया में, and I had ordered one thali. So I'll have this thali and I'll then start towards my home. Had a very nice lunch and now I'm leaving for home. आप देख सकते हैं रोड कितना अच्छा है. सो यही कहूँगा मैं बिफोर आई क्लोज द वीडियो. अगर आप ये जगह पे आना चाहते हैं, वन डे आउटिंग कर सकते हैं. And if you are traveling from Bhubaneswar, you can travel through Dhenkanal and then you connect here. Cuttack also same route. If you are traveling from Angul also, so stay in touch. Thanks. Take care.